It's a new day, and nothing's really quite going your way. You got bad news that's confusing. You got sad news that you're wounded. And it feels like the worst time. You're worried and scared and not fine. You feel unprepared with no signs. Well, it'll be alright, you just gotta fight. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be our best. When everything breaks at the seams and you feel like you're losing belief, well, damn it, you just gotta stay strong. When it all falls apart and goes wrong, when you feel let down and so lost, and it feels like you can't hold on, well, damn it, you just gotta stay strong. 'Cause sometimes things go wrong, and one day everything's gone, but you can make it out and move on. So damn it, you just gotta stay strong. You know that it sucks and it hurts. It's like you've been cursed by the world at its worst. I'm sorry, I know you can't see it, but maybe all these things happen to you for a reason. So stay strong and push through it. Your willpower is everything you got, don't lose it. And one day things will get better. You just gotta get through the stormy weather. What about things happen to the best of us? It seems like they should be blessed. They just might be angels here as guests, teaching us to be. ये हमारे पास GS125 का प्रोजेक्ट आया था जो रिस्टोर हो गया। पार्शियल रिस्टोरेशन ये कंप्लीट नहीं है, जिसमें मतलब इंजन रीबिल्ड और पेंट वर्क इसमें नहीं है। ये इसका अपना ही पेंट रिस्टोर हुआ है। बाकी इसकी ग्रिप्स वगैरह चेंज हुई हैं, सारी इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ। इसमें आपका डिपर भी आ जाता है, हैज़र्ड भी आ जाता है, किल स्विच वगैरह और सारा कुछ। तो इस बाइक में अगर हम बात करें कि काम क्या क्या हुए हैं, तो जितना क्रोम वर्क है वो सारा दोबारा हुआ है। इसका बोल्ट्स वगैरह रीस्टोर हुए हैं सारे दोबारा। उसके बाद वायरिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि बाइक काफ़ी टाइम से पार्क था। रिम्स वगैरह जो हैं वो नए लगे हैं इसके सारे, स्पोक्स वगैरह सब कुछ, रिफ्लेक्टर्स, इंडिकेटर्स, और मैक्सिमम जो पार्ट्स रीस्टोर हो सकते थे वो रिस्टोर हुए हैं इसके, और जो बहुत ख़राब थे रिप्लेस होने वाले वो रिप्लेस हुए। तो पार्शियल या हाफ रिस्टोरेशन इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि इसमें इसका जो फ्रेम है वो भी नहीं पेंट हुआ, इंजन पेंट नहीं हुआ, इंजन में कोई काम नहीं था बाइक के, वो नहीं हुआ। तो इसलिए अदरवाइज़ अगर इस तरह के भी काम होते तो फिर ये जो है वो कंप्लीट होता। अभी आपको चेक कराता हूँ इसकी बाकी चीज़ें भी। ये हैज़र्ड इसका ऑन हो गया। ये इसकी पार्किंग ऑन होगी, ये मेन बीम आ गई, और ये आपका आ गया डिप।